नमस्कार। आज हम माइकल ड्रेटन की एक शॉनेट है जिसको हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में। और ये भी शॉनेट लव शॉनेट है। इसमें स्पीकर अपने उस बिलवेड से अलग होने की बात करता है। अलग होने के बाद भी उसके इमोशंस को परसिस्ट करता है, रिटेन करता है, उसके इमोशंस उसमें रहते हैं। आइए देखते हैं इस सॉनेट जो कि शेक्सपियरियन पैटर्न में लिखा गया है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो शेक्सपियरियन पैटर्न है, शेक्सपियरियन सॉनेट की तरह है। आइए पढ़ते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। Since there is no will, come let us kiss and part. Nay, I have done you. Nay, I have done. You get no more of me. And I am glad with all my heart, that thus so cleanly I myself can free. Shake hands forever, cancel all our woes, and when we meet at any time again, beat not sin either of our brows, that we one jot of former love retain. Now at the last gasp of love's latest breath, when his pulse failing passions speechless lies, when faith is kneeling by his bed of death, and innocence is closing up his eyes, and now if thou dost, when all have given him over from death to life, thou mightest him yet recover. इसमें जो स्पीकर है वो अपने रिलेशनशिप्स को, लव रिलेशनशिप को समाप्त करता है। इसकी वजह इनसिंसियरिटी रही होगी, क्या रही होगी। वो उस वेलवेट को एड्रेस करते हुए कहता है, Since there is no help, come let us kiss and part. Since there is no help, since क्योंकि there is no help, अब कोई help means chance, क्योंकि अब कोई ऐसी संभावना नहीं रह गई। So let us kiss and part, इसलिए कह रहे हैं आइए हम लोग एक बार लास्ट में एक दूसरे को किस करें और पार्ट में सेपरेट, अलग हो जाए। Nay, I have done. You get no more of me. Nay, I have done. Means वो एश्योर कर रहा है, उसको विश्वास दिला रहा है अपने बिलवेट को कि I have done means I have finished. उसने खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। You God get no more of me. अब तुम और मेरे हृदय में अपने प्रति प्रेम को नहीं पाओगे। And I am glad, you glad with all my heart. You glad with all my heart. से विश्वास दिलाता है, मैं खुश हूँ, पूरी तरह से खुश हूँ। And thus so cleanly I myself can free. कि इस प्रकार बड़े आसानी से मैं खुद को आपसे मुक्त कर रहा हूँ, तुमसे मुक्त कर रहा हूँ। The tone is ironic, let me say. Seconds forever, cancel all our woes. एक बार फिर कह रहा है कि आइए हम लोग हाथ मिलाते हैं और इस साथ साथ अपने सारे प्रॉमिसेस को, प्रॉमिसेस, वोज मीन्स प्रॉमिसेस, अपने सारी प्रॉमिसेस को खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं। एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, लेकिन फिर कह रहा है कि अगर कभी भी फिर से हम लोग जब मिलते हैं एक दूसरे से, तो beat not sin in either of our brows, that we one jot of our former love retain. Beat not sin, beat not sin, ऐसा ना लगे, ऐसा ना दिखाई पड़े कि हम लोगों के किसी भी आंखों में, एक्सप्रेशन में, चेहरे के एक्सप्रेशन में, ब्रोज में भाव में, ऐसा ना लगे कि हम लोग थोड़ा सा भी जॉट ऑफ फॉर्मर लव, अपने पहले प्रेम के भाव को रिटेन, परसिस्ट कर रहे हैं, अभी भी बनाए हुए हैं। रिटेन मीन्स कंटिन्यू कर रहे हैं। Now at the last gasp of love's latest breath, when his pulse failing passions speechless lies, इसमें उसकी टोन बदल गई है
उन दोनों में कमिटमेंट करता है। अब थर्ड क्वार्टेन में उसकी टोन बदल गई है। इसमें इसके स्पीकर्स का भी ऐसा लगता है कि द थर्ड प्राइम, दैट इज द एंट्री ऑफ द थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो गई है। एंड ही इज represented here as a messenger of his of the speakers to his beloved। ऐसा लग रहा है कोई मैसेंजर्स को भेजा है इसने, अपने इस स्पीकर ने अपने उस बेलबट के पास, और उससे जाकर बोल रहा हो कि नाउ एट द लास्ट गैस, गैस मीन्स लेट मी से द ब्रीथ, अब वो अंतिम जैसे सांसें ले रहा हो, मुंह खोल के ऐसे पड़ा हुआ सांस लेने का प्रयास कर रहा हो, ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रीथ, अब वो अंतिम सांसें ले रहा है अपने प्रेम की। व्हेन हिज पल्स फेलिंग पैशन स्पीचलेस लाइज, व्हेन हिज पल्स फेलिंग पैशन स्पीचलेस लाइज, और जब उसकी भावनाएं, उसकी पल्स बीटिंग्स, फीलिंग्स मीन्स ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, लगभग रुक सी जा रही हैं, और उसकी भावनाएं इमोशंस स्पीचलेस लाइज, पैशंस लाइज स्पीचलेस, और यहाँ तक कि इसकी भावनाएं भी अव्यक्त कंडीशन में हो गई हैं। मीन्स वो लवर्स कंडीशन में नहीं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, बिकॉज ऑफ हिज सिकनेस, बिकॉज ही इज लाइंग ऑन हिज डेथ बेड, क्योंकि अपनी मौत की शैया पे पड़ा हुआ है। व्हेन फेथ इज नीलिंग बाय हिज बेड ऑफ डेथ, फेथ इज नीलिंग, फेथ पर्सनिफाइड, और जब विश्वास मानो घुटने टेक दिया हो, विश्वास का भी कोई स्थान नहीं रह गया हो, उसके डेथ बेड के पास बैठ के मानो पड़ा हुआ हो, एंड इनोसेंस इज क्लोजिंग ऑफ हिज आइज, और अभी भी मानो एक निश्चलता का भाव धीरे धीरे उसकी आंखों के साथ बंद हो रही है, मानो समाप्त सी हो रही है। नाउ इफ दाउ दिस when all have given him over, when all have given, if thou didst, और ऐसे में अगर आप, जबकि सारे लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया है, सारे लोगों ने उसको त्याग दिया है, या ऐसे में तुम ही हो जो फ्रॉम डेथ टू लाइफ thou mightest him at recover, thou mightest him at recover from death to life, अब तुम ही हो जो उसे फिर से मौत से छुड़ा करके एक नया जीवन दे सकते हो, मौत से छुड़ा करके वापस आ सकते हो। तो ऐसा लगता है जैसे ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है और कपलेट है, इन दोनों में जो स्पीकर है वो थर्ड पर्सन है, वो आके एंट्री किया है और वो नरेट कर रहा हो उस लवर्स की कंडीशंस को, उस बिलीवर्ड से। ऐसा लग रहा है जैसे इसने मानो मैसेंजर्स जानबूझ के भेजा हो। तो इट इज अ लिटिल एम्बिवलेंट इन नेचर, वी मे से थोड़ा सा अलग टाइप है। सो लेट मी एक्सप्लेन नाउ इट इन इंग्लिश। इज अ फेमस सोनेट ऑफ माइकल ड्रेटन। ड्रेटन was Shakespeare's contemporary. His timing is 1563-1631. So speaker in this poem is addressing his beloved, because let me just make it clear that he might have observed that now no fidelity, no trustfulness remains on the part of his beloved. So he says that since now there is no chance to continue with the same sense of love, continue with the same love relationship, so it is better for them to kiss at last and separate from each other forever. Then he assures his beloved that he has finished all his relationship. No drop of love remains in his heart for his beloved now. So it cannot be experienced by his beloved in the heart of the speakers. He says quite happily he has ended all the relationships with his beloved. So easily now he is able to free himself from his beloved. So disappointed, let me say, the speaker is in this poem, that he wants to finish up all the relationships, end all the relationships. In the second quatrain we say, okay, he just wants to shake hands. He proposes his
beloved to shake hands with him again, last shaking of hands, and cancel, cross, and all the promises that they might have made in their previous days, promises of love. She just wants to cancel it all, end it all, and again, let me say, takes the commitment, or let me say, makes the commitment that if by chance they come across each other, there should be no expression of love in their eyes. There should be no continuity of the same love in their eyes. So these are the new promises that those are being taken by the lover and his beloved. Now at last, in the third quatrain, he has just the third person's entry, we can say here. He might have sent a messenger to his beloved because of having the same feeling of love for her. So the messenger, we can say the messenger is now talking to his beloved and says and tells about the condition of speakers who is lying on his deathbed. Now at the last gasp of love's latest breath, the messenger says that his beloved, I mean the lover, is lying on his deathbed and taking the last breath of his life. So pulse beating is also almost suspended, yet the faith remains in his eyes. That it's supposed to be there. It is supposed to be there. And now he's almost about to die. At such conditions, messenger asks his beloved that it is only his beloved who can come close to him and bring his lovers back from the grip of death to the life. I think I have explained well, I have tried to explain well the points. So this is the explanation. Let me talk about the structure. As already I told that it has the three quatrain. It is written in a Shakespearean pattern of sonnets. Pattern of Shakespearean sonnet. It has three quatrain. Rhyme scheme is the same as it is in Shakespearean sonnet. A B A B, C D C D, E F E F, and G G. So this is the rhyming pattern. I think I have already told you the complete, let me say, the fact of these poems and try to explain it well. You must have got the points. So keep on studying well with 100% concentration. But let me appeal once again to you, if you are first time viewers, don't forget subscribing my channel and activating the bell icon so that you may get the notification of uploaded video again and again. So till then, goodbye. Have a good luck.